So hi friends and welcome back. In previous video we had discussed about the natural frequency of simple pendulum. So in today's video we will discuss an important topic, that is energy conservation in spring mass system. Now why to learn this energy conservation in spring mass system? Because if we understand this concept very clearly, then our energy method and Rayleigh's method becomes very simple. Okay? This concept is very useful in solving the numericals of energy method as well as Rayleigh's method. So I hope you will see this lecture till the end, and if you had not subscribed to my channel then please subscribe, and if you have any doubts then please ask me in the comment section. So without any further delay, let's get started. So now we will start. So before understanding the conservation of energy in spring mass system, we have to understand that what is the conservation, law of conservation of energy. So according to the law of conservation of energy, energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted to one form to another. Means what is the meaning of this statement? That if a body, for example, if a body having only a kinetic energy and this body goes under some motion, any kind of motion, and it reaches here. So this body is undergone any motion due to some forces, the kinetic energy of this body is converted into the potential energy of this body. Means at this state, at the position 1, and let's say this is position 2, means at position 1 this body is having only the kinetic energy. So total energy is kinetic energy at this position. Okay. Now when it undergoes any kind of motion due to some forces, then the body, the energy in the body is converted totally into potential energy. Means at this state the total energy is the potential energy. Okay, means you can see here that energy is constant, just it is transformed to one form to another. So at position 1 it was kinetic energy and it is converted at position 2 into potential energy, but total energy is constant, just the change is in the form. Okay, so energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted to one form to another. Total energy of the system remains constant. So write a note that total energy remains constant. Now when this is possible, now when the forces are the conservative force, then only this law of conservation of energy can be applicable on any body. For example, on this body the conservative forces are acting, then only we can say that total energy of this body remains constant after doing some work. So it is important that the forces, okay, the forces should be conservative forces. Now you will think that what is conservative forces? So what are conservative force? So a force is said to be conservative if the work done by or against that force does not depend on the path. It depends only on the final and initial positions. Okay. So for example, our gravitational force is conservative force, and in our case spring force is also a conservative force. Okay. So the work done by this gravitational force does not depend on the path, it just depends on the initial and final position. So for example, let's say this is a mountain and this ball has to be brought to this top. So our initial position is this and our final position is this. So our initial and final are fixed. Now is our call to bring this ball directly from this to this or here to here. So if we bring this from top to bottom to top directly, then the path is different. Let's say this path is A, and if we bring this ball from this path, let's say path B, to our final position, then the work done by this force, that is gravitational force, or against that gravitational force. In our case, we are doing the work against this gravitational force to bring this ball from I to F. So the work done against this force does not depend on this path.
just it depends on this initial and final positions. Okay, so if you bring this ball from path B or path A, the work is same because our initial and final positions are same. Similarly for the spring force. Okay, now think that what is non-conservative force. So only difference is that a force, I will write here a non-conservative force. So non-conservative force is a force is said to be non-conservative if the work done by or against that force depends on the path. It does not depend on the final and initial positions. Okay, I will repeat that non-conservative force is a force is said to be non-conservative if the work done by or against that force does not non-conservative force. So a force is said to be non-conservative if the work done by or against that force depends on the path. It does not depend on the initial and final positions. So example is our friction force. So example is frictional force. As you know that friction depends on the path, that if the path is long then friction force is more, and if the path, for example, let's say this is the path for 6 meters and this is the path, let's say, okay, we will fix the final and initial position first. So let's say this is I initial and this is final. Now if I bring a body from this path, let's say A, and if I bring this body directly to this part from B, then what will be the friction force? So if I bring a body from this path A, then you know that we have to work more against this friction. Why? Because friction force is non-conservative force. Okay, now if we bring a body from this path B, then we know that path is small, so our work will be small. So our work which is needed to bring this object from path A to path, position I to position F is less. So work is dependent on the path. So this type of forces is said to be non-conservative forces. So a force is said to be non-conservative if the work done by or against that force depends on the path. So this is about non-conservative and conservative forces. Now we know that what is the total energy? That is summation of kinetic energy plus potential energy. Means our total mechanical energy is equals to summation of kinetic energy plus potential energy. So according to the law of conservation of energy, our total energy should remain constant. So this is constant. Okay. Now when this is possible, when the forces are conservative forces. Okay, so note that point, that whenever the forces are conservative forces, then our law of conservation of energy can be applied. Okay, now we will see in our spring mass system what type of kinetic energy will be there and what type of potential energy will be there. So first we will see that kinetic energy. So in our spring mass system we have linear kinetic energy, that is because of the linear motion. Okay, linear kinetic energy, that is half mv square, and rotational kinetic energy, it is because of rotation. Rotational kinetic energy, that is half I omega square. Now here this I is of mass moment of inertia. Okay, and this is about the center of gravity, about center of gravity. In the Newton's second law method, we find this moment of inertia, mass moment of inertia, about the point which is hinge, means the object. For example, in previous video when we had derived the natural frequency of pendulum, then we had find the mass moment of inertia about this point which is pivot point, okay, or the point of hinge of this object. Now in this method, in the total energy, means our energy method, we will find this mass moment of inertia about the center of gravity, means about this point. Okay, so remember that in Newton's second law of motion, the mass moment of inertia is to be find about the point of pivot point, or point where the object is rotating or hinged. Now in this energy method, we have to find this mass moment of inertia about the center of gravity of the body.
So remember that. And this omega is the angular velocity. So this is angular velocity. Now we will see the potential energy. As we know that we have two types of potential energy, that is gravitational potential energy. First is gravitational potential energy, which is due to gravitational force, and second is strain energy or spring potential energy. Now why this energy is there in this spring? Now when we expand or compress this spring, then there will be a strain in this spring, and due to this strain the energy will be stored in this spring, and that energy is known as strain energy or spring potential energy. Means whenever a spring undergoes the expansion or compression, that time the energy will be stored, and that energy is known as spring potential energy or strain energy. Now we will see the conservation of energy in the spring mass system. So now we will see the first case when the spring mass system kept horizontal. So in this case, the type of energy conservation we will see. So now at first, when the mass is held with the spring, then there will be an initial deflection or not. Pause the video and think. So the answer is no. Why? Because the mass is kept horizontal and there will be a no gravitational force to pull this mass downward. So this spring will be in the natural length. जब हम इस मास को एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखेंगे और इस मास के साथ हमने स्प्रिंग टाई की है, तो इस स्प्रिंग में इनिशियल डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मास हॉरिजॉन्टली कैप्ट है. सो ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे ही है ना. सो इस स्प्रिंग में ना ही कंप्रेशन है ना ही एक्सपांशन है. मीन्स इस पोजीशन पे स्प्रिंग में कोई भी स्ट्रेन एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नहीं है. ओके, सो एज दिस मास इज इन इक्विलिब्रियम, ओके, सो दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन. ये मास अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है. ओके, सो जब भी ये स्प्रिंग इन हॉरिजॉन्टल केस ये नेचुरल लेंथ पे होगी, तभी हमारे को ये मास की हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल जाएगी. मीन्स इक्विलिब्रियम पोजीशन मीन्स समेशन ऑफ फोर्सेस at this position on the object is 0, and also the spring is in natural condition, so it is not expanded or not compressed, so there will be no spring potential energy. So जब भी हम ये मास को खींच के यहाँ पे लाएंगे, फॉर एग्जांपल ये मास खींच के यहाँ पे आ गया, ये मास m है और ये खींच के यहाँ पे आ गया, तो इस स्प्रिंग में एक स्ट्रेन जनरेट होगी. सो स्ट्रेन जनरेट हुआ, सो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी भी जनरेट होगी. सो इस पॉइंट पे स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होगी. ओके, सो हमारे पास स्प्रिंग मास सिस्टम में दो एक्सट्रीम पोजीशंस है, एक यहाँ पे और एक यहाँ. जब ये स्प्रिंग कंप्रेस होने के लिए आएगी तब ये मास यहाँ पे होगा. तो ये दो एक्सट्रीम पोजीशन पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा होगी. क्यों? क्योंकि ये जब मास यहाँ पे होगा तब स्प्रिंग में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांशन होगा. सो स्प्रिंग में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेन होगा. सो स्ट्रेन ज़्यादा होगा तो हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी भी ज़्यादा होगी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी. और जब मास यहाँ से यहाँ आएगा तब यहाँ पे भी ये एक्सट्रीम पोजीशन पे भी स्प्रिंग में कंप्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा. सो जब कंप्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो स्प्रिंग में क्या होगा? स्ट्रेन एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा होगी. मीन्स दो एक्सट्रीम पोजीशंस पे हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम होगी. ओके, तो अब हम देखेंगे कि जब ये मास मीन पोजीशन से पास होगा तब उसमें कौन सी एनर्जी होगी, हम अभी फाइंड करेंगे. सो लेट वी कंसीडर दिस एक्सट्रीम पोजीशन एज 1 एंड दिस मीन पोजीशन एज 2. सो व्हेन वी डिफ्लेक्ट दिस मास बाय x, so this length is x distance, so what type of energy will be there we will see. So to know we have to apply the total energy theory. I mean we have to apply the law of conservation of energy, that is total energy should remain constant. So energy E equals to kinetic energy plus potential energy. So to find the energy at point 2 we have to equate
the total energy at point 1 is equals to total energy at point 2. So the kinetic energy plus potential energy at point 1 is equals to kinetic energy plus potential energy at point 2. So जब भी ये मास पॉइंट 1 पे होगा तो कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी. तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी टाइप की है? 2 टाइप की. एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मास तो हॉरिजॉन्टल पे ही कैप्ट है, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो आएगी नहीं. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0. नाउ मास is kept at point 1, so there will be a expansion in the spring. So due to the expansion there will be a strain energy in the spring. So what will be the strain energy? The formula of strain energy is half k into deflection square. That is, k is the spring constant and x is the spring constant and x is the deflection. So it will be half kx square. I will show the derivation of this formula in the next video when we will discuss the energy method. Okay, so half kx square is the potential energy will be stored in the spring at point 1. So this is the energy which will be at the point 1. Now we will see for point 2. Okay, the second energy is kinetic energy. So what is the formula of kinetic energy? It is half mv square. It is for linear kinetic energy, and half I omega square. It is for rotational kinetic energy. But we know that here the motion is only linear. So our linear kinetic energy will be there or not, we will see. Rotational kinetic energy will not come. So we will see that linear kinetic energy is there or not. Now when this mass comes at point 1, then there will be a maximum potential energy. And when we release this mass goes such a way. Okay. So जब भी मास ये पॉइंट एक्सट्रीम पोजिशंस पे आएगा, ये दोनों एक्सट्रीम पोजिशन पे आएगा, तब मास की वेलोसिटी 0 होगी. क्यों? क्योंकि ये मास अब यहाँ से डायरेक्शन चेंज करेगा. फॉर एग्जाम्पल जब ये मास यहाँ से यहाँ आया तब उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ थी? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी. और ये जब एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया है तब वो क्या करेगा? अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करेगा. सो जब भी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, अब इस डायरेक्शन में जाएगा, तब उसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे 0 हो जाएगी अप टू सम सेकेंड्स. ओके, अप टू सम मिली सेकेंड्स. ओके, सो इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो गई. सो वेलोसिटी जब भी 0 होगी तब हमारी काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी. ओके, अब यहाँ पे भी सेम होगा. जब मास को यहाँ से रिलीज किया तब मास ने ऐसा ट्रैवल किया और यहाँ पे आया. ओके, अब जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आया तब अब मास अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करेगा. क्यों चेंज करेगा? क्योंकि यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई. अब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई तो अभी वो रिलीज होगी. वो रिलीज हो गई कौन सी में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में. बट इस पॉइंट पे, एक्सट्रीम पॉइंट पे, जब मास अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करेगा तब यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी एक्सट्रीम पॉइंट्स पे. सो एज वेलोसिटी बिकम 0 एट द एक्सट्रीम पॉइंट्स, आवर काइनेटिक एनर्जी इज 0 एट एक्सट्रीम पॉइंट्स. So at point 1 only the energy will be there is strain energy or spring potential energy. Now we will see for point 2. Now जब भी हमने जब ये मास पकड़ के रखा था तब उसकी वेलोसिटी तो 0 थी, काइनेटिक एनर्जी भी 0 थी. ओके, अब जब मैंने छोड़ा तब ये मास ट्रैवल होके यहाँ पे आया. तो यहाँ पे आया मतलब उसकी वेलोसिटी तो है, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी तो है. सो वो हाफ mv स्क्वायर लिखेंगे, लीनियर काइनेटिक एनर्जी. अब देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं. तो जब भी ये मास ट्रैवल होके इस डायरेक्शन में आता है तब ये पोजीशन हमारी कौन सी है? इक्विलिब्रियम पोजीशन. सो इक्विलिब्रियम पोजीशन में हमने देखा था कि स्प्रिंग कौन सी लेंथ पे थी? अपनी नेचुरल लेंथ पे थी. सो नेचुरल लेंथ पे थी तो उसमें ना ही एक्सपेंशन था ना ही कॉन्ट्रैक्शन था. सो उस पॉइंट पे ना एक्सपेंशन है ना कॉन्ट्रैक्शन है. सो स्ट्रेन एनर्जी ये पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे 0 है. So potential, spring potential energy is 0 at point 2. Okay, so we will write plus 0. So we are getting that half kx square at point 1 is equals to half mv square at point 2. Okay, now what is the meaning of this statement? Okay, I will tell. ये point 1 पे ये मास था तब उसमें कौन सी एनर्जी थी? ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी थी. अब जब मैंने इस मास को रिलीज किया, ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में. जब भी मैं इसको छोड़ूंगा तब उसमें धीरे 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 वेलोसिटी बढ़ती जाएगी. जब ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगा तब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी.
और यहाँ से अगेन वो डिक्रीज होती जाएगी ये एक्सट्रीम पॉइंट तक, और एक्सट्रीम पॉइंट पे आने तक इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे 0 हो गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पॉइंट इज 0। सो ये कन्वर्जन होगा कि पॉइंट 1 पे हमारे पास सिर्फ कौन सी एनर्जी थी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। सो जब हमने छोड़ा तब ये मास ट्रैवल किया, तो इसकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में। और मैक्सिमम कहाँ पे होगी, जब मास ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास होगा तब उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्यों मैक्सिमम होगी, क्योंकि वेलोसिटी ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। और हमारे पास वेलोसिटी की भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। इफ एग्जाम में पूछा कि वेलोसिटी ऑफ द मास एट equilibrium position, when the mass passes at the equilibrium position, what is the velocity, then we can find from this equation. So this half and this half gets cancelled, so we will get V equals to under root of K by M into this half kx square will be there, okay, into x. So this is meter per second. Okay, so I hope you got this whole concept for horizontal case. Now we will see for the vertical case. In this case, our gravitational potential energy has not come into action. Why? Because our mass is kept on horizontal. Now we will see when our mass is held vertical, then what gravitational energy will come. We will see. Now we will see for case 2, when spring mass system is held vertical. अभी जब अब स्प्रिंग पे कोई भी मास नहीं लगा तब स्प्रिंग में कोई डिफ्लेक्शन आएगा। हमने अज्यूम किया है कि स्प्रिंग मासलेस है। सो जब भी मास हमने सस्पेंड नहीं किया स्प्रिंग में तब कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है। तो हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल के केस में जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे थी हमने वहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन देखा था। ओके, जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे थी तभी मास की इक्विलिब्रियम पोजीशन हमको मिली थी। अब हम देखेंगे कि हमारी न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होगी। तो जब भी मैंने इस स्प्रिंग के साथ मास को लटकाया तब ये स्प्रिंग इनिशियल डिफ्लेक्शन में गई और अप टू ट्रैवलिंग एक्साई डिस्टेंस इट कम्स इन इक्विलिब्रियम, मीन्स इस पोजीशन पे वो इक्विलिब्रियम में आ गई। तो ये हमारी न्यू इक्विलिब्रियम हो गया, ये हमारा न्यू इक्विलिब्रियम हुआ। ओके, हमारे केस हॉरिजॉन्टल वाले केस में जब स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी तभी हमको इक्विलिब्रियम पोजीशन मिला था, बट यहाँ पे जब स्प्रिंग इनिशियल डिफ्लेक्शन में गई तब हमको एक इक्विलिब्रियम पोजीशन मिला जो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो समेशन ऑफ फोर्सेस एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इज 0। सो फोर्सेस आर दिस mg is acting downwards and spring force, that is kxi, is acting upwards. So this is k, spring constant k. So mg is equals to k into xi. This is our first equation. Okay, so अभी इस पॉइंट से जब मैंने मास को खींचा, हमको पता है हमारे पास दो एक्सट्रीम पोजीशन है, एक ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये ऊपर जाएगा तब ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है। ये मास जब ऊपर जाएगा तब हमारी ये एक्सट्रीम पोजीशन है। ओके, जब हमने इस मास को खींचा और यहाँ पे रख दिया, अभी पकड़ के ही रखा है, तो अब इस पॉइंट पे क्या क्या एनर्जी होगी और इस पॉइंट पे कौन सी एनर्जी होगी, अब ये हम देखेंगे। तो सेम प्रोसीजर, लेट दिस मार्क एज पॉइंट 1, दिस मार्क एज पॉइंट 2 एंड सेम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थियरम, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2। ये क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनर्जी थियरम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी can neither be created nor be destroyed, but it can be transformed into one form to other. So total energy is constant. So at point 1 the energy, for example at point 1 we are getting only potential energy. So the total energy of this mass at point 1 is potential energy. Now when the mass reaches point 2, then this total energy is converted into different form. That is, for example, we are getting kinetic energy. Okay, so total energy at point 2 is kinetic energy. So our energy is constant, total energy is constant, just it is transformed into one form to other. Okay, now we will see at point 1 what are the energies. So kinetic plus potential at point 1. Now we know that we have two types of kinetic energy, but rotational kinetic energy will not come as the mass is moving linearly. So
as the mass reaches this extreme position, we know that velocity changes the direction at this point. So at point 1, at extreme point, the velocity is 0. So as velocity is 0, kinetic energy will be 0. जब भी मास ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा तब ये मास अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करेगा. तो जब भी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो उस पॉइंट पे अप टू सम सेकेंड्स द वेलोसिटी विल बी 0. So as velocity is 0, our kinetic energy will be 0. So plus कौन सी रहा? पोटेंशियल एनर्जी. अब हमारे पास इस केस में दो पोटेंशियल एनर्जी है. कौन सी? एक तो स्ट्रेन एनर्जी और द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और सेकेंड दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो पहले तो हमारे पास आएगी स्प्रिंग एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी. सो इट इज हाफ के इंटू, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? जब ये मास इस न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आया तब वो कैसे आया? स्प्रिंग के इनिशियल डिफ्लेक्शन से. सो स्प्रिंग में तो डिफ्लेक्शन आया है, सो स्ट्रेन एनर्जी भी होगी. तो इस पॉइंट पे न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्ट्रेन एनर्जी होगी, वो कितनी होगी? हाफ के इंटू एक्स आई स्क्वायर. अभी जब हमने इसको खींच के यहाँ पे लाए पॉइंट 1 पे, तब भी उसमें स्ट्रेन एनर्जी आई. क्यों आई? क्योंकि अभी वो एक्स से डिफ्लेक्ट हुआ. सो हमारी टोटल स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी? हाफ के इंटू एक्स प्लस एक्स आई दी होल स्क्वायर. सो दिस इज दी टोटल स्ट्रेन एनर्जी एट पॉइंट 1 विच इज इक्वल्स टू, हाँ अभी हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रह गई. तो जब भी हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करेंगे तब हमारे पास एक हक है कि हम हमारी रेफरेंस एक्सिस चूज कर सकते हैं. तो मैं लेट्स से इस एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस लूंगा. लेट्स से h इज इक्वल्स टू 0. दिस इज द रेफरेंस एक्सिस एंड द हाइट which is measured in the upward direction from this reference axis are taken as positive. So at point 1 the h is 0 because we had taken this as the reference axis. So at point 1 there will be no gravitational potential energy because u equals to mgh, that is gravitational potential energy equals to mg into h. So h is 0 at point 1, so it will be 0. So gravitational potential energy at point 1 will be 0 which is equals to kinetic plus potential at point 2. अब हम चलते हैं पॉइंट 2 पे. अभी मैंने मास को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया. तो जब ये मास इस न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास होगा तब उसमें कौन सी एनर्जी होगी हम अब देखेंगे. अभी मैंने इसको छोड़ दिया मतलब उसमें वेलोसिटी आई. सो एक हाफ mv² होगी. रोटेशनल तो होगी नहीं क्योंकि लीनियर हो रहा है. अभी हम देखेंगे कि पोटेंशियल है कि नहीं. अभी मैंने इसको यहाँ से यहाँ छोड़ा तो हमारे पास दो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और स्प्रिंग पोटेंशियल. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी क्योंकि यहाँ से ऊपर गई, मतलब यहाँ से ऊपर हाइट मेजर हुई, वो कितनी ऊपर गई? x जितनी. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh, h इज अवर x, सो mgx प्लस दूसरी कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी. अभी क्यों होगी वो? जब ये मास यहाँ पे पहुँचा, न्यू इक्विलिब्रियम में पहुँचा, तब उसमें स्ट्रेन स्प्रिंग में अभी डिफ्लेक्शन बाकी है. वो कितना डिफ्लेक्शन बाकी है? xi जितना. ओके, सो इस पॉइंट पे स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हाफ के एक्स आई स्क्वायर. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. जब ये मास यहाँ पे आया, ये कौन सी पोजीशन है? न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन है. तो जब भी ये मास यहाँ पे आया तो स्प्रिंग में अभी तो एक डिफ्लेक्शन बाकी है, वो कौन सी? xi. तो उसमें भी यहाँ पे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी होगी? हाफ के इंटू एक्स आई स्क्वायर. अभी हम इस इक्वेशन को एक्सपांड करेंगे. सो अब इसको अब एक्सपांड करते हैं. ये इट इज़ a प्लस बी दी होल स्क्वायर. सो आई विल राइट हियर, सो 1/2 इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आई स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स आई विच इज इक्वल्स टू, आई एम राइटिंग हियर, विच इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर plus mgx plus half k into xi square. Now we will multiply half k into this bracket. So we will get half k into x square plus half k into xi square plus this half and 2 gets cancelled. So we will get k into xi into x which is equals to half mv square plus mgx plus 1/2 kxi square. Now this 1/2 kxi square, 1/2 kxi square gets cancelled and this k into xi
K into xi we have mg. So we will substitute K into xi equals to mg. So this is mg into x. So this mgx and this mgx gets cancelled. Now we are getting the equation, that is half kx square is equals to half mv square. So you can observe that this equation is same as the equation which we are getting in the horizontal case. Okay, so what we can conclude, that we can ignore this initial deflection which comes in the spring in the vertical case, and from this equilibrium position we can count this deflection. We can ignore this deflection which we are getting in the initial stage, and the gravitational potential energy we can ignore. Okay, because it is going to be cut, as you can see here. So the distances can be measured from the equilibrium position. We can ignore the above deflection, and the gravitational potential energy will not come, as it will going to be cut from both the sides. Okay, so अब हमारे पास एक समरी हो गई, कौन सी? जब मास अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तब उसमें कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी. तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी. क्यों मैक्सिमम होगी? क्योंकि उसमें डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है. ओके, ये जब ये नीचे का एक्सट्रीम पोजीशन और जब स्प्रिंग ऊपर जाएगी तब भी उसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, उसमें कंप्रेशन ज़्यादा है. सो जब भी कंप्रेशन और एक्सपांशन ज़्यादा होगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी. और हमको पता है जब मास एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी. एज वेलोसिटी विल चेंज द डायरेक्शन, द वेलोसिटी विल बिकम जीरो एट दैट पॉइंट. सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी maximum at extreme position and kinetic energy will be zero as velocity is zero at extreme position. Now as mass reaches to this equilibrium position, means as mass reaches to the equilibrium position, the kinetic energy will be what? Will be maximum. Why maximum? Because as mass reaches to this equilibrium position, the velocity in the mass will be maximum. So it will be so the kinetic energy will be maximum. And potential energy will be zero. Why potential energy will be zero? Because the spring in equilibrium is undergone a natural length, which we had discussed in the horizontal case. Means in the equilibrium position the spring is under natural length and there will be no deflection or no expansion, no compression. So there will be no strain energy or spring potential energy, which we had seen in the horizontal case. Now in this vertical case we had derived this whole equation and we are getting the same equation as we are getting in the horizontal case. So we can assume that at this equilibrium position the spring is under the natural length and we can ignore or we can neglect the potential energy. So potential energy at equilibrium position will be zero. Originally the potential energy of the spring will be cancelled, as you can see here. So spring energy is cancelled, and this at the equilibrium position we are getting only kinetic energy, which is maximum due to velocity is maximum and potential energy is zero. So write a beautiful note that at extreme position we are getting the potential energy is maximum and kinetic energy is zero, and at mean position we are getting potential energy is zero and kinetic energy is maximum. This will be useful in the next video when we will discuss about the energy method. Okay, so I hope you understood the whole topic and you had enjoyed this whole lecture. If you have any doubts, then please ask me in the comment section. So this is about the energy conservation in the spring mass system. So that's all. I hope you had enjoyed this lecture, and if you have any doubts, then please ask me in the comment section. Please subscribe to my channel for more educational videos, like and share. In next video we will discuss that what is the energy method, and we will solve some numericals related to the energy method. Okay, so stay tuned and bye.